We will now be seated. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Yoweri Museveni, Right Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi, your distinguished delegation from India, government officials from Uganda, distinguished delegates, the business community, I want to welcome you on behalf of the private sector in Uganda. My name is Gideon Badagawa. I'm the Executive Director of the Private Sector Foundation, and we have organized this business forum, Your Excellencies, along with the Confederation of Indian Industry. Your Excellency, we are aware of the tightness of the program you have this morning, but suffice it to say that we are thankful to the Right Honorable Prime Minister, not only to have chosen to include on his itinerary Uganda, as part of the countries he's visiting in Africa, but also to be with us this morning to grace this occasion when we meet as Ugandan business community and Indian business community. Your Excellency, I would like now to introduce to you the Chairman of the Private Sector Foundation, who will speak quickly to welcome you as the host of this event, Mr. Patrick Vitature, and thereafter he will invite the President of the CII to welcome you. Thank you. On behalf of the Uganda private sector, right across the board, from the smallest business to the largest, it is my singular honor and pleasure to welcome our esteemed visitor and Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. I must thank most sincerely our President, Yoweri Museveni, for making this wonderful event happen. Business cannot flourish in lukewarm water or in hostile environments. Businesses grow where there is warm, cordial relationships. Today's visit takes us to another level of doing business together. Let this be a milestone in our history. Your Excellencies, India and Uganda share so much in common with respect to their people, economic setup, and business undertakings. Our two countries have significant focus on agriculture, agribusiness, ICT, tourism, mining, including oil and gas, as well as developing infrastructure to support market access. For Uganda, our goals are very clear. The government has worked very closely with the private sector, and we know exactly what we want. It would be a shame for us to miss this opportunity today if we do not put down on ground something major that the private sector of India and the private sector of Uganda will work together and rebuild the relationship we had from history, that we can go to greater heights together. India has the capital, the know-how, the skills. So far, we are already training many Ugandans in India. There is transfer of skills going on. There is knowledge transfer. There is building standards transfer and stronger trade relations. Today, let us mark a new era and let's build on this. We want to draw on the experience, the rich and deep experience of India to do business. We'd like to set up an incubation center. The private sector working with the CII of India to set up a private sector incubation center to initiate business, to transfer skills so that we can get into manufacturing, to move from petty trading and more manufacturing and value addition in Uganda. Today we have signed an MOU with the CII of India, and this MOU is going to be an area where we shall consolidate the gains we have made today, and we want to build upon this going forward. The PSFU is an umbrella organization that represents all the businesses in Uganda, regardless of size, and want to see that in the medium term, the business that we do between the two countries grows from strength to strength. Because of time, I will skip a lot of the details of what we intend to do. It will be captured in the MOU, but I would like to give a gift today as a token of our appreciation for this visit to the Prime Minister of India. We have a small token, protocol, the book, which we shall hand over to His Excellency. And in the meantime, I would like us to exchange the MOUs that have been signed. Because of time, we had the opportunity to sign with the chairman of CII.
If I could invite him please to the podium so that we can exchange the MOUs. The task on hand cannot be accomplished without a board. The Board of Private Sector Foundation, please stand up for recognition. Your Excellencies, amongst us today we have another MOU signing between two private sector organizations, one from India and one from Uganda. The Panshir Group headed by Mr. Atul Chwadia, and from Uganda we have the Crypto Savannah Group, who shall be signing an MOU where we shall be setting up the India-Africa Bridge Program, which will train over 10,000 Ugandans in the next 5 years. We thank Your Excellencies for making this opportunity to collaborate happen. I would now like to invite my counterpart to make a few remarks. Mr. Tan. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, His Excellency President Yoweri Museveni, His Excellency the Prime Minister of Uganda, ladies and gentlemen, today is the great event for all of us. Both the leadership of the two large nations are joined hands and making an impact for the global societies. So we are very happy to share with you the certain opportunities which we can explore between the Uganda and India. As you know, the India is the fastest growing economy, it's growing rapidly. An enormous competitive edge we have captured. Some of the values we would like to transfer to the Uganda and to make the long-term sustainable life for the next generations. So we have identified the 4 areas which, sir, we would like to share with you. The infrastructure development, as Indian company has enormous experience in working with the PPP model, which we will be happy to bring here. This model could be used to promote the Indian investment and Uganda projects in a large scale basis to bring the better infrastructure possibilities. The second area we have identified is the setting up the export processing zones, because lots of resources are available in the Uganda. How we can bring the broad value added and bring to the export to the global market, not just for the Indian market, how we can work together and make that manufacturing in a cooperations in the export processing zones, which is quite good, successful India model is there. We are happy to bring in the interest of the Uganda. The agriculture and agro-based industries, there is a huge potentiality because food security is the biggest priority for any nations. And we would be happy to share with you some of the competitive edge which we have. The India expertise could help the sustainable increase the crop productivity, food processing, the cold supply chains, livestock value chains, as well as the skill development in agriculture sector of the next generation of the value chain of the agriculture sectors. Because young India is bringing a new way to do the agriculture, not the conventional and traditional way, which can bring a more affordable product for our consumers and also for the export market. The fourth area we have identified, it's a enormous competitive edge of the renewable energy. As you know, our Prime Minister has set the very ambitious target for our country, 227 gigawatt of renewable energy by 2022 and 500 gigawatt by 2030. Why it is the necessity is there to bring the energy securities? Not only that, to mitigate the climate risks and also to give affordable, sustainable energy for long-term period for our consumers, and that's the potentiality which we have edge on a competitive edge. Not only that, being a cost-competitive expertise and technology and innovation skill of India, we have achieved the very, very low cost of energy, which is a sustainable and for the consumers
country like Uganda. So that's very, very happy we can explore. What we understand in Uganda in energy sectors, it's 5,300 megawatt potentiality of resources there. At the same time, good hydro is there. So hydro pump storage and the renewable energy is a good win-win situation to bring a stability for the country in Uganda. So I'm confident that with the leadership and guidance of His Excellency President and the Honorable Prime Minister Sri Modi ji, we will quickly see expansion and business engagement to our two nations. Once again, I would like to thank everyone present here today for the making our visit success. And both sides of the industries leader and both sides of industries are very equipped, sir, to build the strong relationship in the business front and the culture and trade relationships. Today we have very less trade is there, but we would like to expand in the next 5 years 5 times. Thank you very much. Thanks for giving me opportunity. Thank you very much, PSFU. Thank you very much, CII, Your Excellencies. We are aware of your very tight schedule. But I now take the opportunity. It shouldn't have been me, but the private sector works that way, to invite His Excellency the President to speak to the business community. Your Excellency, sir. His Excellency the Prime Minister of India, His Excellency Narendra Modi, the Right Honorable Prime Minister of Uganda, and the distinguished business persons who are here. Business is about money. And money means I buy what you produce and you buy what I produce. In so doing, you are supporting my prosperity and I'm supporting your prosperity. Because when you come to these meetings, you make long speeches, you don't even remember what somebody has said. This is simple. Purchasing power is the power of business. The purchasing power of the population. The money in the pockets of the citizens. That's what drives business. The capitalist system almost collapsed in 1929, the Western capitalist system. That was because they had not paid attention to the idea of the purchasing power. They had concentrated on profit, which means the minimization of costs, and they had forgotten about the purchasing power. So therefore here, we started a bit late because I was coming from Entebbe, and I don't want to say many words, but here we are essentially talking about 3 points. Maybe 1 point first, the purchasing power. To use the purchasing power of India to support us, and we to use our purchasing power to support you the Indian business people. And according to the figures, I've been supporting you more than you have been supporting me. That's what I told the Prime Minister when I met him in Delhi. At that time, Uganda was buying from India goods worth $1.2 billion. Uganda was selling in about $24 million. We are now
apparently selling for $44 million, while India's selling to us has sort of gone down to about $700 million because our capacity is also coming up. So therefore, what I would do, I'm glad you came, so many of you. I'm very happy to see you. I thank the Prime Minister for bringing you. This is the spirit. This is the spirit of doing business. So therefore, where you can help us is in 3 areas, which I call ITT. Investments, which you can make here, so we produce for 4 markets, 5 markets. Market number 1, the market of Uganda, of 40 million people. These Ugandans buy a lot of things, including human hair. They buy it also from Number 2, produce for the regional market of East Africa. That's 170 million people. Number 3, produce for the market of Africa. Because recently we signed a continental free trade area agreement in Kigali. So then potentially, especially after we have solved the issue of infrastructure, some roads and so on, you are talking of a market of 1.25 billion people, the whole of Africa, potentially. I know you are 1.25 billion already, but we are overtaking you. Because Africa will be 2.5 billion by 2050. Of course, Africa is much bigger than India, so it can accommodate these extra people without much problem. Now, the fourth market is the Indian market itself, because you can produce products here which will sell back to you people. And when we sell to you, we also buy more from you. After it is mutually supportive. And finally, number 5, we can sell to third-party markets. Not only sell in Africa, not only sell to India, but to sell to, for instance, the United States. You know, I've got relatives in the United States, and one of them was president there recently. Now, those relatives of ours helped us to negotiate a very good deal with the United States, where we export 6,500 products to the U.S. market, quota-free, tax-free. These people here should give you that list, the list of those products, which we can, under our boards, it's called the African Growth Opportunity Act. 6,500 products which you can sell from here to the US, quota-free, tax-free. That's why our exports to the US are easy, because I think there is a price difference of what, 30% or something like that. The other man of you don't carry an the one, fine spinners, is not here. When we sell our textiles to the US, they give us a price advantage, I think of about 30% because of that arrangement. So therefore, I thank the Right Honourable Prime Minister for bringing you in big numbers. You are in the right place at the right time if you want to make money. I thank you, and I invite His Excellency the Prime Minister to come and give us wisdom of his outstanding work
what he has done in India. When he was chief minister, he came here. I met him. I didn't know that he would become a big man. Now later when I heard that the man you met is now the Prime Minister of the whole of India, so I was very happy when you have got a friend in such a powerful position. And he has got a very business-friendly approach. I don't know whether he has written like a book or something which my ministers could read, because many of my officials are anti-business, you know that. I thank you, I wish you good luck. Welcome, Prime Minister. आदरणीय राष्ट्रपति जी, भारत और युगांडा के व्यापार जगत के सभी श्रेष्ठीजन, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे युगांडा ने इतना प्यार दिया है, राष्ट्रपति जी का व्यक्तिगत रूप से इतना स्नेह रहा है और भारतीयों के प्रति युगांडा का जो लगाव रहा है, मैं समझता हूं ये हमारे उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। यहां विदेश कि दुनिया के लोग हैं, दुनिया में कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं मिल सकता जो मुनाफा न चाहता हो। और कारोबार कोई ऐसा बढ़ नहीं सकता कि जिसमें संबंधित लोगों के हितों की रक्षा न हो। मैं जब युगांडा और भारत के आर्थिक संबंधों की तुलना करता हूं तो मैं मानता हूं कि परफेक्ट विन विन सिचुएशन वाला हमारी पोजीशनिंग है, लेकिन हम कम पड़ रहे हैं कि इस परिस्थिति का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और अगर हम सही रूप से चीजों को स्ट्रेटलाइज करें तो मैं जरूर मानता हूं कि हम बहुत कुछ इससे भी आगे निकल सकते हैं। राष्ट्रपति जी की शिकायत सही है, हमारे बीच में ट्रेड इम्बैलेंस है और युगांडा का ये हक बनता है कि भारत ट्रेड बैलेंस के लिए 2-4-10 कदम आगे चलना पड़े तो चलना चाहिए और मैं इसके लिए तैयार हूं। आज पूरा विश्व का ध्यान भारत की तेज गति से आगे बढ़ रही इकोनॉमी पर है। हिंदुस्तान एक पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस होने के कारण, टैक्स स्टेबिलिटी होने के कारण, प्रिडिक्टेबल टैक्स सिस्टम होने के कारण भारत के साथ चाहे इन्वेस्टमेंट का विषय हो, चाहे ट्रेड का विषय हो, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत सरलता रहती है क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल के बीम पर निर्णय नहीं होते हैं।
आप ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हैं कि ये होगा, ये नहीं होगा। और इतनी जो प्रायोरिटी होती है तो व्यापार और उद्योग के लिए सबसे ज्यादा सुविधा होती है। ये इतिहास गवाह है कि जब अफ्रीका एक संघर्ष से काल से गुजर रहा था, जब दुनिया में कोई ये मानता नहीं था यहां से कुछ मिल सकता है, कुछ ले सकते हैं। अगर अफ्रीका से जुड़ना, युगांडा से जुड़ना मतलब देना ही देना है। वो भी एक कालखंड था। उस समय दुनिया में किसी को फुर्सत नहीं थी युगांडा के दुखों को देखने की, अफ्रीका के संघर्ष को देखने की, अफ्रीका के संकटों को देखने की। एक अकेला हिंदुस्तान था जो कंधे से कंधा मिला करके अफ्रीका के साथ, युगांडा के साथ खड़ा। तब लेना पाना नहीं था, लेकिन मानवीय मूल्यों के लिए जिंदगी खपानी थी। जिस देश के लोगों का ये इतिहास रहा हो, मैं आज की और आगे की अफ्रीका की पीढ़ी को, युगांडा की आने वाली पीढ़ी को, युगांडा की युवा पीढ़ी को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम किस मकसद से काम कर रहे हैं। हमारे एरियाज कौन से हैं? एक, युगांडा के लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग हो, यहां का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, यहां का युवाओं का, यहां की नई पीढ़ी का स्किल डेवलपमेंट हो। ये सारी शक्तियां वो हैं जो आपसे दुनिया की कोई ताकत चुरा नहीं सकती है, छीन नहीं सकती है, आपको मजबूत बनाती है। ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरी हमारी प्राथमिकता है, आखिरकार प्रगति होती है, ग्रोथ होता है, उसका एक आधार होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दूसरा होता है नेचुरल रिसोर्सेज में वैल्यू एडिशन। नेचुरल रिसोर्सेज में वैल्यू एडिशन के बिना आप इकोनॉमी को ताकत नहीं दे सकते हैं। अगर हम यहां कॉटन ग्रो करें और कॉटन ही बेचते रहे तो खरीदार अपनी मनमर्जी का मालिक होता है, वो तय करेगा, उस दाम से देना पड़ता है। लेकिन अगर युगांडा की धरती में FWF से काम होता है, फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन, कॉटन हो, कॉटन से धागा बने, धागा से कपड़ा बने, कपड़ा से फैशन डिजाइनर इस पर काम करे, उसमें से कपड़े बने, भिन्न भिन्न प्रकार के पोशाक बने और दुनिया के बाजार में बिके। तब जो खेत में कॉटन ग्रो करता है उसकी ताकत बढ़ती है। और मुझे कल यहां एक सज्जन मिले थे, वो कह रहे थे आपने नैरोबी में मुझे बताया था कि ये करो, और मैंने जाकर युगांडा में किया है और युगांडा के अंदर मेरी ये शुभ शुरुआत हुई है। ये हमारी सोच है। यहां इतनी भूमि है, आज पूरी दुनिया ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट के लिए, एग्रो प्रोडक्ट के लिए लाड़ा की दुनिया में एक बहुत बड़ा मार्केट ऑर्गेनिक एग्रो प्रोडक्ट का है। होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए पूरे विश्व को ऑर्गेनिक एग्रो प्रोडक्ट में रुचि है और दुनिया बहुत तेजी से होलिस्टिक हेल्थ की तरफ जा रही है। कोई कल्पना कर सकता है जिस युगांडा के पास हजारों एकड़ भूमि ऐसी है जहां कभी केमिकल का एक बूंद भी नहीं गिरा है, वहां पर पैदा होने वाली चीज दुनिया पागल हो सकती है, नहीं हो सकती है। हम चाहते हैं अपना पसीना बहाने के लिए
हम चाहते हैं अपना धन खपाने के लिए, ताकि यहां की जमीन पैदावार तैयार करें और युगांडा मजबूत बने और दुनिया के हेल्थ को भी लाभ हो। कभी कभार मनुष्य का स्वभाव है, मैं जब छोटा था तो एक चुटकुला सुना करता था कि एक पंखा बेचने वाला बस स्टॉप पर, गरीब लड़का पंखा बेच रहा था ताकि हवा चले तो पसीने में, वहां गर्मी बहुत होती है हिंदुस्तान में। तो एक बेचने आया, वो कहता है 1 रुपया होगा। दूसरा आया, वो कहता है 8 आना होगा। तो लेने वाले का मन करता है यार रुपये वाला क्यों ले, 8 आने वाला ले। तीसरा आया, साहब 4 आने में होगा। तो उसने कहा चाहिए तो ज्यादा अच्छा है, उसने 4 आने वाला ले दिया और 3-4 बार किया, टूट गया। तो वो बस तो अभी चली नहीं थी, उसको पकड़ा, यार तुम पंखा दे के गए थे। तो बोले मैंने ऐसा थोड़ा कहा था, इसका तो तरीका ये था पंखा ऐसे पकड़ो, मुंडी हिलाओ। तुम पंखा हिला रहे हो तो टूट ही जाएगा। आपको बाजार में ऐसे मशीन बेचने वाले बहुत मिलेंगे जी, ऐसा बढ़िया वर्णन करेंगे, ऐसा बढ़िया बताएंगे कि देखिए ये मशीन ऐसा है, इतना ताकतवर है। और अगर उसका पूरा साइकिल देखेंगे बैर एंड टायर का, तो शायद उस मशीन को साल भर में रिपेयरिंग करते 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 6 महीने तो कारखाना बंद रहेगा, क्योंकि रिपेयरिंग करने वाला भी उस देश से बुलाना पड़ेगा और वो भी कुछ कमा करके चला जाएगा। कभी कभार आज बहुत जल्दबाजी करने वाली एक पीढ़ी है जो इससे मोहित हो जाती है। और मैं राष्ट्रपति जी से कल से मिला हूं, वो मुझे एक ही बात बता रहे हैं कि मोदी जी कुछ करो या ना करो, आप एक काम पर बल दो। मैंने कहा क्या? वो बोले हिंदुस्तान से मुझे मशीन्स दो, हमारे लोग मेहनत करेंगे, हमें हिंदुस्तान से आधुनिक मशीन चाहिए। और उन्होंने कहा मुझे हिंदुस्तान की मशीन पे ज्यादा भरोसा है और मुझे चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाने आया कि 0 डिफेक्ट के साथ और यहां की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उस टेक्नोलॉजी आपको देने के लिए तैयार है, वो मशीन देने के लिए तैयार है जो उसका, हाँ शुरू में वो महंगे होते हैं, कोई चिल्लाएगा भी, देखो ये ऐसा सरकार है, एक ऐसा देश है, वहां से तो इतने में मिलता था, यहां से इतने में मिला, लेकिन वो वैसा ही पंखा है जी। पंखा हिलाना तो मुंडी हिलानी है और इसलिए तय आपको करना है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत की जो युवा पीढ़ी है, जो स्टार्टअप के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, गरीब से गरीब कम पढ़ा लिखा बच्चे को भी हफ्ते 10 दिन उस टेक्नोलॉजी के साथ वो जुड़ जाता है तो खुद एक प्रोड्यूसर बन जाता है, प्रोडक्ट करने लग जाता है। इनोवेशन के बिना दुनिया चलने वाली नहीं है और इसलिए भारत ने इनोवेशन को बल दिया है। उस इनोवेशन के क्षेत्र में भी हम यहां की युवा पीढ़ी को साथ लेकर के आगे चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारत का जो माइंड है और युगांडा का जो यंग माइंड है, दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड होगा तो मैं समझता हूं युगांडा बहुत आगे निकल सकता है और युगांडा का आगे निकलना बहुत जरूरी भी है। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में शांति के लिए, स्थिरता के लिए, विकास के लिए युगांडा एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है और पूरे विश्व की शांति में अफ्रीका भूमिका अदा कर सकता है। और भारत महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध की परंपरा से पला हुआ, विश्व शांति को लेकर के चलने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलने वाला हिंदुस्तान, यहां के आर्थिक संपन्नता के लिए, यहां के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए भारत हर पल आपके साथ है, आपके साथ योगदान करने के लिए तैयार है।
और यहां जो क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार होगा, मशीन भले भारत का होगा, लेकिन यहां का क्वालिटी प्रोडक्ट का खरीदार हिंदुस्तान में बढ़ता जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। फिर एक ट्रेड डेफिसिट की शिकायत करने मैं आऊंगा। मैं राष्ट्रपति जी को प्रार्थना करूंगा, आप कुछ भारत से खरीदिए, अब तो आप भारत से खरीदते ही नहीं है, लेकिन उस दिन के लिए मुझे खुशी होगी, हमें खुशी है कि वो दिन जल्द आए और उस दिन को लाने के लिए भारत आपके लिए जो भी कुछ कर सकता है करने के लिए तैयार है। मैं फिर एक बार राष्ट्रपति जी ने इतना समय दिया, इतना प्यार दिया, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you.